This video shows the technique of pulmonary lobectomy for congenital lobar emphysema. This was a 4-month-old child with involvement of the left upper lobe, which is, as we know, the most common site of involvement in lobar emphysema. The operation was performed through a left posterolateral thoracotomy, entering the chest through the third intercostal space. 1:400,000 lignocaine with adrenaline was infiltrated in the line of incision to dampen the subcutaneous oozing. So, just dividing through the well-known muscles of the chest wall, the latissimus dorsi and the serratus anterior, to get access to the ribs and the intercostal muscles. फिफ्थ इंटरस्पेस कहते हैं ये लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में फोर्थ है अपर लूप में ऐसे The intercostal muscle being divided at the upper border of the lower rib, that is between the third and fourth ribs, and the pleura coming into view between the spread jaws of the artery forceps. एक्स्ट्रा प्लूरल तो जाना नहीं सर पूरा था। चलो ठीक है, चलेगा ये भी आई थिंक। The phenociator retractor being spread. As we are usually habituated to extrapleural surgery for esophageal atresia, we haven't actually divided the pleura, which is being divided here to expose the underlying lung.
and one can appreciate the pale, overinflated appearance of the emphysematous left upper lobe. The incision, which seemed to be a little short, is being extended. And this allows the convenient delivery of the emphysematous upper lobe of the left lung. एक किसी चीज़ में इसको ग्रिप लेनी पड़ेगी, otherwise because it's emphysematous and it's going to be exercise, I think you can hold it like this, but gently. Now, the direction of retraction of the lung is important. As you can see here, the lung has been retracted anteriorly and inferiorly relative to the patient, and this brings the upper surface of the hilum into view. The aorta can be seen pulsating in the background. With this direction of retraction, the pulmonary veins, the artery, and the bronchus come into view starting supero-inferiorly, and they can be dissected and ligated conveniently. ठीक है, ये this is the पूरा which is कैंची लंबी overlying the hilum. पेशेंट ठीक है मैडम? So here beginning the dissection of the pleura overlying the hilum to expose the first of the vessels. दिख रहा भैया, अंदर दिख रहा है मैं कर रहा हूँ, ये तो जूम वूम कर लो, अगर वहाँ जहाँ कैंची चल रही है वो दिखना चाहिए. जैसे लाना पड़ेगा सर आ जाएगा सर. नहीं नहीं मेरा अच्छा उस तरफ से. सुनो यार, ये अलग से क्या पड़ा हुआ है ये चीज़? वही मैं कह रहा था सर, ये एंटीरियर उसके ऊपर नहीं, ये तो एबनॉर्मल है क्लियरली. दैट वन. ये तो कोलैप्स है ना. तो इसकी लोकेशन मतलब ये कौन सा है क्या? लेफ्ट में अपर और लोअर होते हैं, राइट में अपर मिडिल लोअर होते हैं. ये तो है नहीं एम्फाइसेमेटस. ये एम्फाइसेमेटस तो नहीं, ये है, हाँ ये वो वाला नहीं है, part. ये तो फूलेगा भी. इसमें तो कोलैप्स एल्वियोलाई दिख रहे हैं, है ना. और लोअर में लोअर वो है, ये पड़ा लोअर. ओके, पहले सबके वेसल्स वो आइसोलेट कर लेते हैं, उसमें क्या है पता चल ही जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है. सेंटर करना तो आएगा सर. हैं? एक आईसीडी भी पड़ी है बैग में 20 नंबर का ड्रिल. अलमारी में रख दिया होगा. बस, इसकी हेडलाइट ऑन कर दो प्लीज. डॉक्टर साहब देखिए सही आ रहा है. इसमें देखिए यहाँ आप यहाँ देखेंगे सर. देखो यार, मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं हाँ, इसमें ठीक है. यहाँ से नज़र नहीं हटा रहा.
ठीक है। इमरजेंसी वाले हैं तो बता। ओके, एक वेसल सामने आया जो इसमें जा रहा है, क्या है ना, हाँ सर। ये वाला वो कोशिश कर रहा है इसमें जाने Silk. की। So here we can see the first of the pulmonary veins coming into view, which go into the emphysematous upper lobe. This has been lifted up by the Rumel's artery forceps. Each of these vessels is doubly ligated towards the mediastinum, with a third ligature towards the lung and before being divided. ये देखो, चाटू काम है। दिस इज पोस्टीरियर मोस्ट जिस पे कि मतलब आपको चाय और रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे फॉर नॉट नोइंग दिस। नहीं, वेन इज द पोस्टीरियर मोस्ट। ऑपरेटिंग ऑन अ pulmonary lobectomy, that is the least thing you are expected to answer in a split second. वेन आर्टरी ब्रोंकस होता है, ये याद रखो। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस द वेन इज ऑलवेज द मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर। वेन आर्टरी डक्ट हाइलम पे होता है, वेन आर्टरी ब्रोंकस यहाँ होता है। नॉट दैट आई हैव अ बेटर मेमोरी, आई जस्ट हैव अ बेटर कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स which help a failing memory. That's all. With few exceptions. And one of the reasons, हाँ देखो भैया, कुछ आर्टरी पहले बांधना चाह रहा हूँ मैं एक्चुअली, ये तो लंग कंजेस्ट हो जाए। शिकार का टाइम ये जो है, बैठो। शेयर मार्केट उलट सकता है, कैलाश के जल्दी उलट सकता है। देखो ये तो इसी में जा रही है ना, ये आर्टरी रही, ये रही आर्टरी। एक मिनट देखो, ये आर्टरी है ना, उसके ऊपर आइसोलेट करने वाले आर्टरी वही वेन के आगे होती है, उसकी अभी कुछ नहीं करना। One can ligate each vessel as it appears. However, as in this case, I prefer to isolate and lift all of the vessels before ligating them serially one by one. This is the first segmental artery being ligated. ये आएगा डॉक्टर साहब, देखिए अभी दिखाता हूँ। ये जो आप काम ये कर दें ना, डॉक्टर साहब एक सेकंड जरा देखिए, ये कर दें सर। 3 लीटर ज़्यादा मोटा, हैं? ज़्यादा मोटा। नील काट देना, ये सिर्फ टाई के लिए यूज़ होगा बाद में। हैं भैया, दैट्स विशफुल थिंकिंग इन द ट्रू मैनर ऑफ द। 2 सेकंड, इसको काट, एक काट दो, एक पकड़ रहे हैं, दूसरा बांध में तब करें। उधर डबल आइए होगा ना, लंबा कर सकते। हाँ, आ जाए तो टू मिनट। हमारे पुराने अंग्रेज़ी अस्पताल से पर्चा निकला है इसका, 41 लंग रिसेक्शन का। छोड़ दो, वो वाली से अच्छी इसके ऊपर नोक पर, एक और नोक पर। एक इससे पतला सिल क्या कोई 30 वो दे दीजिए।
वेन के आगे है ना यार, ये मैं जिद में इसको पहले मान रहा हूँ। जिद में इट्स लॉजिकल टू ट्राई द इनफ्लो फर्स्ट, लेकिन नील हटा दीजिए। चश्मे दिखता नहीं। ये क्या हुआ? दिख रहा भैया कुछ? ये तो ऐसे ही पकड़े रहने दो, इसको सीजर दे दो लाइन से। ये यहाँ कट गया, 1 मिनट। फाइन टिप दे। उससे कुछ जम नहीं रहा था मामला। चलो नेक्स्ट वेसल, अब वेन बांधनी शुरू करते हैं। लाइए, सबसे पहले 30 फिर 20। So, after having ligated the segmental artery, we proceed to the first of the 3 segmental veins in the order that they appear from the superficial to the deep aspect. And we'll put 1 distal and 2 proximal ligatures as followed for the artery. इधर से देखो, इधर कुछ नहीं था। हाइलम पीछे से खोला हुआ है। You can see 3 segmental pulmonary veins, one of which I am tying and the 2 are, and 1 artery we have tied. Just double ligating the, ये 3 भी ठीक है, वैसे इसी से बांध सकते हैं बार बार। कट 1 2 मिल प्लीज। हाँ, आप यार 40 कहती, लेकिन मुझे 40 सेल पे यहाँ भरोसा नहीं पड़ता। 3 पे ही नहीं पड़ा, मेरी गलती नहीं। ये सोचो साला से बाटरी बन रही होता है। एनेस्थेटाइज कर रहा है। Pointed scissor. Well, this is not the sort of happening you want in this kind of operation. I was using 3/0 suture here, not exerting a lot of strength, believe me. उसके बाद डिस्कार्ड।
पेशेंट ठीक है? पेशेंट ठीक है ना? We again, as luck would have it, in the first such patient, we got the hilum very quickly. हमारे एक्स कंसल्टेंट ने भी 41 मरीजों की सीरीज पब्लिश करी है इंडियन जर्नल में. Cut one. हाँ, of these patients. It's from my old hospital in UK. Elder case. So I just got the article 2 days ago. I think that's good. ये काटो, ये क्या है? नंबर. Okay, right. Email please. Okay. सूच No, what else is there? ये कुछ ये भी इसी में जा रहा है, ये तो इसी में जा रहा है. आगे से करते रहो. लाइए. सही प्लीज. And now we move on to the second segmental vein. They can be seen coming off the main trunk of the left pulmonary vein there, being ligated one by one. Suture not square क्यों नहीं बैठ रहा है? नॉर्मली अगर आप रीफ कर दें तो नॉट स्क्वायर बैठ जाता है. Suture स्क्वायर बैठता ही नहीं. So cut this one. Threads होने चाहिए. और खुला जस्ट 30 खुला दीजिए. First. Cut. You can see the main trunk of the inferior pulmonary vein. So just a quick display of the main trunk of the inferior pulmonary vein, just underlying the lung parenchyma there. And the first of the proximal ligatures on the segmental vein now completed. Process. Why isn't the inferior lobe inflating? Cut. Scissors, please. Now let's see if there is another artery. Just making a quick check here to make sure that there are no arterial inflows left to the lung, the lobe that we are trying to excise here. ठीक है, अभी आपको क्लियरली दिख रहा है. अगर यहाँ फिंगर लगा लें तो एक पल्मोनरी वेन जा रही है, उसके पीछे दो आर्टरीज जाएंगी, लूमेल एंड फॉर्सेप्स. So the vein is always the most posterior. And here the third segmental vein comes into view.
and the first of the ligatures going around it. We can now see the inferior pulmonary vein quite clearly as the blood courses through its translucent wall. कुछ ना कुछ आज मैं करूँगा, मुझे मालूम है एक वेन चाहिए इसमें। नहीं, वो वाला काटो, ये बहुत छोटा है ना। नहीं, इतना लंबा मत पकड़िए, सॉरी। हाँ, वो यहाँ पे पकड़िए। 2 मिनट के लिए तो रखना, 2 मिनट। Ideally, the other lobe should start inflating now once the chest is open. For some reason, it's not doing that. ट्यूब की पोजीशन हैं? ट्यूब की पोजीशन आगे पीछे। ऐसा तो नहीं सारा पूरा लंगी एम्फाइसेमा का सर होता नहीं। काटो, 2 मिनट। ये कहते हैं फालतू के लिए। थोड़ी जगह चाहिए, ये पोस्ट वाले सूचर ग्रिप भी छोटी आती है सूचर। ये इनमें जानते हो, इसमें ट्रांसफर ग्रूव्स हैं, वो सूचर छोड़ देते हैं, स्लिप हो जाता है। I'm perhaps being a little overcautious with the knots in this case, but believe me, you don't want one of these vessels to break loose and bleed in the post-operative period. गैप कम है, doesn't matter, it can't bleed from the other end, है ना? Hopefully it can. Right, and let's find artery होगी यहाँ पे। ये artery। ये सीम जा रही है। So moving on to the next segmental vessel and the same procedure of one distal and 2 proximal ligatures. ट्रॉली हो सकता चाहिए 40 या 30। ये ब्रोंकस है। So once the segmental vessels are controlled, this thickish structure is the bronchus going to the emphysematous segment, and that is dissected free and elevated. Of course, before suturing the bronchus, you have to make absolutely sure that you have left the lower lobe bronchus free. Wouldn't do at all to put sutures across the lower lobe bronchus, and that we have to make doubly sure. ये है, so we aren't damaging any of that. ठीक है, okay, so let's get the vessels first here. Bronchus सामने आ गया, there would not be much holding the lobe after that, hopefully. Dissecting through a little bit of the lung parenchyma lateral to the bronchus, being coagulated to make sure that any small vessels don't bleed. ठीक है, we've got this, so let's take that vessel first. Louder, guys.
and ligating the final segmental vein before the bronchus. यहाँ पे लेकिन चूड़ा चीज़ें रहता ताकि छोटा वाला काट नहीं बहुत पास नाप के बड़ा नहीं 2 मिनट प्लीज क्या फिर उसको लटकना मत दीजिए तो दे यार आपकी हो गया हो गया इमरजेंसी वाला है ला वैस्कुलर टोन So after having dealt with all the segmental arteries and veins, it is now time to clamp the bronchus. ये दबाना लीडर फीडर है उसके पीछे We have previously ensured that the lobar bronchus going to the lower lobe is free, and we clamp the upper lobe bronchus, leaving a bit of margin to cut and suture. Usually in these emphysematous lobes, the bronchus is quite thin and flexible. Another thing, before you cut right across the bronchus, it is useful to check that the lower lobe is inflating with ventilation, as we're doing here. So once you confirm satisfactorily that yes, air is going into the lower lobe, we can cut across the upper lobe bronchus and close it off. bronchial stuff. What else is left attaching this to that? रोक लो उनको बहुत थोड़ी देर रुके हो सकता है यहाँ दूसरा केस लगा दें जब तक ये With the bronchus divided, there is only some parenchyma and the odd vessel which is still attaching the emphysematous upper lobe to the rest of the lung, and these can be dealt with quickly, allowing us to remove the emphysematous lobe from the chest.
बिना चश्मे और चश्मे का फर्क है। संजीत 306 और निकाल दो। भैया सुनो, एक फ़ोटो और ले लो यार, एक फ़ोटो ले लें। फ़ोटो। स्लिप करा देंगे यहाँ से यहाँ आ गया। देख रहा ठीक है सर। not holding the vessel. Human. Showing that that's the bronchus. So come to this side so that bronchus is in the vascular clamp and lobe is hanging by just two strands. एक मिनट वेंटिलेशन रोक लीजिए प्लीज. एक मिनट मतलब सॉरी। ओके रिमोट करने से बहुत दिन कर दिया। वैसे है नहीं. So as you can see, there is just a bit of lung parenchyma now attaching the emphysematous upper lobe to the rest of the lung, and that is divided to enable the disease lobe to be removed. There was another sort of extension which initially we felt was unhealthy, but as can be seen here, it looks alright and of a normal consistency, so it is reposited back in the chest, and all that remains to be done is to suture the upper lobe bronchus closed. For the मैडम थोड़ा वेंटिलेशन कम लो. हो रहा है. हाँ सर। सीटी बंद हो सकती है. क्या चल रहा है? आवाज़ किसका है? चार और जो कल की है.
rest of the lung is not sort of coming out of the chest or anything, no? संजीत एक स्वाब फॉर कल्चर नहीं लिया जैसा कि किताब के संजीत जाके वो बाहर से पूछो भैया 20 नंबर का मिला है वो लेने गए नहीं मिल रहा था उनको वापस ड्रेन जानने वाले की मैडम कोई पॉसिबिलिटी नहीं है स्टीम से चला एक्चुअली हम लोग का लॉन्गेस्ट वेटिंग है उसको 8 दिनों से स्टीम चल रहा है और इंजेक्टेबल उसका ट्यूबरक्लोसिस ना होना चाहिए हमेशा ये में प्रॉब्लम होगी ना अननेसेसरी पोस्ट ऑपरेटिव करेक्ट पानी चाहिए होगा पंक्चर टेस्ट करने के लिए सलाइन से सब कुछ संजीत जाके पूछ कर 30 नंबर नहीं नहीं अच्छा चलो ओके कीप कैचिंग होल्ड ऑफ दिस So once the bronchus is completely sutured, it is advisable to test it for air leaks on ventilation, which is what we're doing now. And there doesn't seem to be any obvious air leak. Just testing the bronchus that it's not leaking. ठीक है बंगला छूटते यार नहीं पंक्चर The remaining parts of the lung are inflating well and have almost filled up the chest to replace the space occupied by the emphysematous upper lobe. So the retaining sutures of the bronchus are divided and we proceed with the chest wall closure. नहीं या वो आरबी चलो Clearly, in such situations, an intercostal drain is a wise safety measure. And even though my residents were in favor of a very thick drain, in my view, a number 10 infant feeding tube suffices. It's only air that's going to come out mostly, and I don't think a tube of larger caliber is needed. लाओ तो क्लोजर 30 epidural will help us in the post-op that will be advantage and then despite all my efforts I didn't manage to nurture a very pulmonary vein इतनी बार कोशिश करी मैंने Sutures of 2,0 polygalactin to close the chest comfortably. An Alice's forceps is being used as a rib approximator. It really doesn't serve any purpose to put more pericostal sutures than this, because the chest wall closure is quite secure. नहीं इसको फिक्स करने का कट सर थैंक यू थैंक यू क्या लग रहा है विल सी ये बढ़िया
निकाल के दे दिया, हो सकता है 3 के बदले 4 हो, तो आप कर देती हैं जनरली। नहीं अभी तक डॉक्टर स्टॉप नहीं हुआ क्या? टॉप कर सकते हैं आज ही। खुला सा क्यों छोड़ दिया? वो पूरा की तरफ। नहीं, ये तो बीच वाली है, ये तो पता नहीं शुरू हुआ होगा अंदर है जिसको कोई मुंह नहीं। So the chest wall muscles being approximated there with the running stitch. लेफ्ट। पता नहीं यार, पूरी 5 की कफ ट्यूब चाहिए मुझे। मिल जाएगी यार। बस वही नहीं मिली। 5 ऐसा क्या मतलब अचानक उसके लिए? 6 जी इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? 5 की कफ करते हैं तो 5.5 की कफ चाहिए। बस बहुत बढ़िया नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। हाँ मतलब 5 की कफ मिल जाए तो बढ़िया। आपको भी लग रहा है ये तो आप दे भी दिया हो तो पता कैसे चलेगा, ये बताइए। मैं इसलिए रेपर है बटोर के रखी रहती है, कल को कोई मेरे इतना छोटा होता नहीं है, बहुत छोटी नहीं है। हॉस्पिटल सप्लाई वाला है ना, अच्छा, छोटी ले लो। ये पकड़ लीजिए ना इसको फिर, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, पता है मुझे। अरे ऐसा आप तो दिल पे ले लेती हैं छोटी छोटी बात। नहीं नहीं, अब अगर टूट गई तो टूट गई तो फिर ईश्वर के आगे किसी की चली है आज तक, ये बताइए। नहीं नहीं, लॉक कर दो। आ रही ऐसे। 5 मिनट तो लगेगा। क्या लेना है? तो इसका जैसे निकालो ना, एक और कितना बोलते करा दो चाहिए ना, दो वो हाँ ये दो इसकी निकालो। ये लो। ये उसमें लग जाएगी। अच्छा इसको डायरेक्ट में लगा देंगे। यहीं से लगाओ, अरे इसको उससे रख दो। उसी में लगा दो ना। अरे यार, टूट गया मौके। पकड़िए इसको, लास्ट 2020 ये पकड़िए। इसमें नहीं लगेगा। अच्छा और आज रैप वाला जो छोटा बच्चों वाला वो आता है वो किस उसका ब्लड ट्रांसफर मेरा भी नहीं आ रहा है कि 10.2 भैया। अरे यार तुम लोग भी देख तो लो। किया
उसका 10 था पहले का भी, पीडियाट्रिक्स में भी जो हुआ है उसका वो भी 10 था। हम लोग के यहाँ एक कम आ गई थी तो मैंने कहा एक करा, एक में 9.2 था, एक में 9.5 था। एक ही है वो हमारे सीरियस और पॉसिबल है क्या? सीरियस एंटी आगे से। And finally, the skin closure.